Himachal Pradesh, a home to scenic mountain, rivers, and landscapes. The North Indian state of Himachal Pradesh, apart from its outstanding natural beauty and culture, it is also known for unique mountain cuisine. On regular days, the food of Himachal Pradesh is simple and much similar to other North Indian states. The importance of sitting together with family for a dinner reflects rich culture and traditions of Himachal Pradesh. A popular traditional meal prepared during weddings, local festivals, and special occasions of Himachal Pradesh. It is a complete meal provides an opportunity to be familiarized with the delicacies of the state. Some of the most famous dishes are Channa Matra, Siddhu, and Mash Dal. In this video, we are exploring mountain village of Himachal Pradesh to be familiarized with their traditional food preparations. The house we are visiting is more than 100 years old, has ground floor reserved for animals, middle as living, and on top there is the kitchen. They have an age-old tradition that they cannot even taste the food on a platform they prepare it. ये खाना इस जगह पर नहीं बैठे खाना कभी भी खाना साइड है नीचे यहाँ से बनेगा इस जो बाहर का ये बने जगह बनी है यहाँ जो खाने के लिए कोई जैसे मानो यहाँ दाल उबल रही है उसको नमक देखना है तो निकाल करके इससे बाहर जाएंगे हम इन्होंने जब आटा रखा होता है अच्छा ये आटा खराब नहीं होगा चाहे पानी आए चाहे कैसे ठंड होगी तो खराब नहीं होगा ना कीड़े कोड़े पड़ेंगे इसमें यहाँ से निकालेंगे छन के फिर वो चपाती बनाएंगे या वो तूच बोलते हैं जो खराब माना हाँ। वो इसमें डाला जाएगा इसमें वो देगा गाय को पका के कच्चा आटा बोलते हैं उसको कच्चा आटा एक होता आटा पका करके चपाती बनेगी वो जलेगी उसका जो आयरन जो वो आग दो खत्म हो जाती है वो नहीं आग में बनता है वो जब बनाएगी उसको जो पतीले में उबाला जाएगी पक करके उसको बाहर निकाला जाएगी जब फूल की जाएगी फिर बाहर निकालेगा तो उसका आयरन उसमें रहेगा उसमें ज़्यादा आयरन रहेगा और साथ में घी है और घी और वो आटा खाएंगे पका हुआ आटा तो ताकत ही होगी It is believed that the steam cooked preparations will help the nutrients to stay, and so this is considered very nutritious. से आटा होता है उसको गूंद के आप किसी भी चीज़ के साथ स्टफिंग कर सकते हो जैसे प्याज हो गया तो अखरोट की स्टफिंग बहुत अच्छी रहती है इसके लिए बना के इसको ऐसे बनता है ये ऐसे बिल्कुल रोटी की तरह है फिर उसके बाद जैसे पराठा बनाते हैं वैसे बिल्कुल आलू को ऐसे करके अंदर इसकी ये स्टफिंग रहती है ऐसे देखो ऐसे करके ऐसे बंद करना है इसको ऊपर से ब्लॉक करना है ताकि ये स्टफिंग बाहर ना आए और जो भाप होता है वो अंदर ना जाए तो भाप अंदर गया तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है ऊपर से ऐसे करके सेम मोमो की तरह रहता है This steamed bread has stuffing in it. The most known stuffing is prepared with walnuts and a combination of vegetables. After stuffing the dough, set it aside for about 10 to 15 minutes until it rises well. Greasing the surface of the steamer plate with oil prevents them from sticking with the plate. Plates made up of brass gold Kasaki tal are traditionally used by them. Eating food on this plate would be highly health beneficial.
वही मेहमान इसी में देखा, हर घर में 50-60 लोग होते, कई के पास 100 होते हैं, मेरे पास 40 इस टाइम। हम खुद भी काफ़ी खाते खाना, पूरा परिवार है। The people of Himachal Pradesh are known for their simple lifestyle and welcoming nature. Escape yourself once in Himachal and you will realize the value of your life.